morning to all of you. In the last lecture, we discussed primary cells, and under this topic, we discussed Daniell cell and Lagrange cell. Daniell cell and Lagrange cell. So in Daniell cell, the positive electrode is copper vessel, the electrolyte is sulfuric acid, copper sulfate is the depolarizer, and amalgamated zinc rod while dipping in 10% solution of sulfuric acid act as the negative electrode. Then we also discussed the reactions which took place in the pore spot and within the cell. The EMF of the Daniell cell is 1.09 volt. Then we discussed Lagrange cell. Lagrange cell में क्या है? We are having a glass vessel which contains ammonium chloride solution as the electrolyte, a pore spot having carbon rod along with magnesium dioxide powder. Carbon rod act as the positive electrode and MnO2, magnesium dioxide, act as the depolarizer, and the charcoal powder merely helps in conducting the charge. And zinc rod, while dipping into ammonium chloride solution, act as the negative electrode. The EMF of this cell is 1.45 volt. Then dry cell. Dry cell is a portable form of the Lagrange cell. The general components of dry cell are almost same. That is, the positive electrode is made of carbon rod and the negative electrode is the zinc vessel itself. They can be of any size as per our requirement, and they are used in electric well, torches, transistors, etc. So we will discuss in detail these cells, standard cells further, that is cadmium cell and Latimer-Clark cell, which are used for the reference purpose only. We don't use in practice, but for the comparison purpose of the EMF of the other cells. And after that, we will discuss the secondary cells. Under this heading, we will discuss lead acid cell and nickel iron accumulator, NiFe cell. So these things we will do on slides. So dry cell. A dry cell is a portable form of Lagrange cell. It consists of a zinc vessel containing a paste of sawdust saturated with a solution of ammonium chloride and zinc chloride. Zinc vessel
act as the anode and ammonium chloride is the exciting fluid. The positive electrode of the cell is carbon rod surrounded by a closely packed mixture of charcoal, manganese dioxide and plaster of Paris in a muslin bag. A small hole H is provided at the top of the cell for the escape of ammonia gas, and the vessel is sealed at the top with a shell or pitch. This is your dry cell. This is the muslin bag in which you are having carbon rod along with manganese dioxide and charcoal powder. This is the ammonium chloride paste, and this is sealed at the top with shellac or tar. At the top of carbon rod there is a brass cap for good conductivity, and the other end, this one is the zinc vessel which act as the negative electrode. Positive electrode here is carbon rod, this one, and negative electrode is the zinc vessel itself. This is the small hole through which the ammonia gas formed during the reaction escapes out. The EMF of the cell is 1.5 volts and it falls down gradually with the use. The internal resistance of the cell is low, about 0.1 ohm. As the substance used are in the form of a thick paste, the cell can be used in any position. This is its chief advantage. To obtain large EMF, a number of cells can be placed in series. These cells are very widely used in torch lights, telephone circuits, electric bells and transistor sets. Almost in every field where you need a backup power supply, small backup power supply, in everything, any electronics item where you need DC power, we use these cells. They are manufactured in different sizes to suit the particular need. Then we are having standard cells. These are special type of cells in which the EMF remains particularly constant and are designed and constructed using suitable materials. They are called standard cells. They are only used for the reference purpose, comparison of the EMF two cells. So two of this type are, number one, Western cadmium cell, and second is Latimer-Clark cell. The variation in the EMF of these cells is small with changes in temperature. These cells are meant only for comparing the EMFs of other cells and not used for supplying current in general. So first of all, Western cadmium cell, ये इस तरीके से है. This is your Western cadmium cell. This type of cell is commonly used for comparison purpose. The cell consists of an H-shaped sealed vessel, glass vessel with the horizontal tube serving as the connecting link. This H-shaped vessel, and this is the horizontal tube, the connecting link between the two limbs. Two platinum leads P1 and P2 are sealed to the bottom of vertical limbs and they serve as electrodes. This one, P1 and P2. These
platinum leads serve as the electrode contact points. The positive electrode, that is cathode, is pure mercury covered with a paste of mercurous sulphate and cadmium sulphate. This is your paste of covered with mercurous sulphate and cadmium sulphate, this one. The cathode is made of pure mercury, Hg, and above this we are having a paste of mercurous sulphate and cadmium sulphate, and these cadmium sulphate crystals are here for maintaining the concentration of the solution. The negative electrode, that is anode, is an amalgam of cadmium in which mercury is 87.5% and cadmium is 12.5%. This one. Negative electrode is an amalgam of mercury and cadmium, where mercury is 87.5% and cadmium is 12.5%, which serve as the negative electrode. Here also we have kept cadmium sulphate crystal so that the concentration of the solution remains constant. This is the solution of cadmium sulphate. Okay, this is your cadmium cell. Some crystals of cadmium sulphate are put in the limb to maintain the concentration of the solution. Cadmium sulphate is the exciting fluid and mercurous sulphate is the depolarizer. Action: cadmium changes to cadmium ions plus 2 electrons. The cadmium ions carrying the positive charge travel through the solution and react with the mercurous sulphate and cadmium sulphate according to the following equation. Mercurous sulphate Ag2SO4 changes to 2 mercury ions plus sulphate ions. Cadmium ions react with sulphate ions, giving rise to cadmium sulphate. The overall reaction can be written as cadmium ions plus mercurous sulphate, giving rise to cadmium sulphate plus mercurous ions. The mercurous ions transfer the charge to the positive electrode, that is mercury. When the terminals of the cell are connected to an external circuit, the electrons travel from the negative to the positive electrode and charge is neutralized as 2 mercurous ions plus 2 electrons, giving rise to solid 2 unit of mercury. Conventionally, the direction of current in the external circuit will be from positive to negative electrode. EMF of the cadmium cell is 1.02 volts at 20 degree centigrade. So they are temperature dependent. With the change in temperature, the value of the EMF falls. So this was your Western cadmium cell. Under this heading, the second cell is Latimer-Clark cell. The only difference is of the metal and the solution. The construction of this cell is the same as that of Western cadmium cell, except that the negative electrode is zinc amalgam, that is zinc 10% and mercury 90%, and cadmium sulphate is replaced by zinc sulphate. The positive electrode is mercury and the mercurous sulphate is the depolarizer.
देखिए इसको, ये है आपका लाटीमार क्लार्क सेल जिसमें ये P1 P2 जो है ये प्लेटिनम वायर्स हैं एज द कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. Positive electrode is of pure mercury and negative electrode is of zinc amalgam, that is 90% is zinc and 10% is mercury, and here this is mercury plus zinc. Then here we have kept zinc sulfate crystals here and here to maintain the concentration of the solution, that is saturated solution of zinc sulfate. This is your Latimer Clark cell. So only difference is of here in cadmium cell you are having cadmium sulfate, here you are having zinc sulfate, and positive electrode is same. It was mercury in case of cadmium cell, and here also it is mercury, but the negative electrode is here is zinc amalgam, and in the cadmium cell we were having an amalgam of cadmium. The positive electrode is mercury and the mercurial sulfate is depolarizer in this Latimer Clark cell. Zinc sulfate crystals are put in the limb to maintain the concentration of the solution. The platinum leads from the bottom of the limbs serves as the electrodes contact points. So, here zinc sulfate is the exciting fluid and mercurial sulfate is the depolarizer. Action: zinc changes to zinc ions plus 2 electrons. The zinc ions carrying the positive charge travel through the solution and react with mercurial sulfate and zinc sulfate. According to the equation, mercurial sulfate changes to mercurial ions plus sulfate ions, and then zinc ions combined with sulfate ions giving rise to zinc sulfate. Overall reaction can be written as zinc ions plus mercurial sulfate giving rise to zinc sulfate plus 2 mercury. This is not here, not D, any D, it is zinc sulfate, this ZnSO4 plus 2 mercury ions. The positive charge is transferred to mercury and the neutralization of this charge takes place. When the cell is connected to an external circuit, the mercurial ion combined with the electrons giving rise to solid mercury. The EMF of the cell is 1.43 volt at 15 degree centigrade. The temperature coefficient of EMF is high in comparison to a Western cadmium cell. By temperature coefficient of EMF we mean rise or fall of EMF with decrease or increase of temperature. So these were the standard cells which we conventionally use to compare the EMF of the cells. Okay, so here it is Latimer Clark cell, zinc sulfate. This is your zinc sulfate. Here is no D, it is zinc sulfate. D is not there. So please correct it. And here also zinc sulfate is the exciting fluid and mercurial sulfate is the depolarizer in Latimer Clark cell. Next topic is standard cells. वो तो हमने पढ़ लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेल्स. जैसे प्राइमरी सेल पढ़े थे हमने, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्या, डैनियल सेल, लैग्रांजी सेल एंड ड्राई सेल. उसके बाद हमने डिस्कस किए स्टैंडर्ड सेल्स, कैडमियम सेल एंड लाटिमर क्लार्क सेल. नाउ द सेकंड वन आर secondary cells. A secondary cell or a storage cell is one in which
After the chemical process involved in the discharge of electricity in the external circuit, the original chemicals can be formed again. This is done by passing an electric current in a direction opposite to the one drawn from it. सेकेंडरी सेल क्या है? ये एक स्टोरेज सेल है जिसमें जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो अगर इसमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट पास करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ख़त्म होते हैं वो फिर से दोबारा बन जाते हैं जब हम करंट को उल्टी दिशा में उससे पास करते हैं. The chemical process involved in obtaining current from a secondary cell is called discharge, and the process by which the chemicals are reformed is called charging. Charging and discharging. Discharging का मतलब है when you are drawing current from the cell, it is discharging process. और जब आपका सेल एक बार डिस्चार्ज हो गया उसको दोबारा से करंट लेने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, जैसे वी पास करंट फ्रॉम आउटसाइड इन रिवर्स डायरेक्शन, तो वो जो तरीका है उसे कहते हैं हम चार्जिंग. लेड एसिड सेल एंड निकल आयरन अक्यूमुलेटर आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स. तो सबसे पहले lead sulfuric acid cell or accumulator. Accumulator means which can accumulate charge. That's why it is called accumulator. The main component of this cell are number one container, second electrolyte, and third electrodes. Container is consisting of a glass of bakelite case. Electrolyte is dilute sulfuric acid, H2SO4, and electrodes are, these are alternately parallel plates of lead oxide, PbO2, oxidized from PbO, which forms the positive electrode, that is cathode, and spongy lead, that is brownish lead, reduced from lead, forms the negative electrode, that is anode. These alternate plates are insulated from each other by porous separators made of wood, rubber, plastic और glass fiber. तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो है PbO2 ऑक्सीडाइज फ्रॉम PbO, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो है ब्राउनिश लेड, that is reduced from lead. Reaction during charging, तो जब आप lead acid accumulator को चार्ज करते हो तो जो रिएक्शन हो रहा है at the cathode, lead sulfate ion, it is lead sulfate plus 2 H plus ions plus 2 electrons, they give rise to solid lead plus sulfuric acid H2SO4. तो जो H2SO4 is formed during charging. At the anode, node पे क्या हो रहा है? Lead sulfate plus sulfate ions plus 2 unit of water giving rise to lead dioxide plus 2 unit of sulfuric acid plus 2 electrons. Therefore, during charging, lead sulfate is consumed to give lead, lead dioxide and sulfuric acid. These are the basic constituents which we need for drawing the current from the accumulator. तो ये हमें during charging जो lead sulfate है solid insoluble वो consume हो रहा है और lead, lead dioxide और sulfuric acid during charging हमें मिल रहा है. Thus, active materials consumed during discharge are retrieved back during charging. तो जो मटेरियल हमने कंज्यूम किए थे ड्यूरिंग डिस्चार्ज वो दोबारा से हमें चार्ज करने के बाद वापस मिल गए.
तो सेल से आप फिर से करंट जो है वो ड्रा कर सकते हो। Working during discharging, each plate is converted to lead sulfate, sulfuric acid is consumed and water is produced. Electrolyte density becomes 1.12 when cell is fully discharged. Further discharging is harmful as the lead sulfate formed is insoluble, so it will hinder the flow of current. During recharging, by passing a direct current, the reaction becomes reversed. Electrolyte density rises to 1.28, which is maximum. Further charging will concentrate electrolyte, which can eat up the plates. अगर आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी बढ़ने के कारण जो आपकी plates हैं, they can be eaten up. The EMF of each cell is 2.05 volt and internal resistance is very low. Total reaction during charging and discharging can be represented as 2 units of lead sulfate plus 2 units of water, sign of reversible reaction. It changes to lead plus lead dioxide plus 2 units of sulfuric acid. ये जो साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब है अगर जो आपकी LHS रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपकी जो होगी ये Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 होगी और अगर रिएक्टेंट आपके लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4 है तो जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो 2 यूनिट ऑफ लेड सल्फेट प्लस वाटर होंगे। तो दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका मतलब ये है कि व्हेन रिएक्टेंट and product they are interchangeable during charging and discharging. The capacity of an accumulator is expressed in ampere hours AH. If the capacity is specified as 50 Ah, it means that cell can be used to supply a continuous current of 10 amperes for 4 hours, or if you draw 2 ampere current then you can use the cell for 25 hours. The product of current and hour will tell you the capacity of the accumulator. So if it is 100 Ah, then you can draw 10 ampere current for 10 hours or 1 ampere current for 100 hours. In this way we specify the capacity of an accumulator. The efficiency of lead acid accumulator is about 80%, provided low values of current are drawn from it and the cell is used soon after it is charged. So this was regarding lead sulfuric acid cell or lead acid accumulator. So this is all for today. Now there are few announcements for you. Just listen and note it very carefully. DHA 7 आफ्टर CT1 जो है और आपका सीरियल नंबर है DHA 15. तो DHA नोट करें आज का, वो है what are secondary cells, give construction, working and reactions during charging and discharging of lead acid accumulator. ये आपका DHA है आज का. और इसके बाद में आज आपको एक और कंपोनेंट घर से करने के लिए दिया जा रहा है, वो है एडिशनल असाइनमेंट
which is of 20 marks for all branches and all students. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको नोट कर लें आप. इसको आपने 1 दिसंबर तक सबमिट करना है. 1 दिसंबर इज द लास्ट डेट. बल्कि आपको जो लास्ट 30 नवंबर और 1 दिसंबर होगी, उन 2 दिन में आपको अपनी ये एडिशनल असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है. जिन ब्रांचों को ऑलरेडी लिंक मिल चुका है वो उसी पे रजिस्टर हुए हैं और उसी तरीके से जैसे आपने अपनी DHA 1 सबमिट की है 8 कंपोनेंट जैसे 1 to 8, वैसे ही आप अपनी एडिशनल असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी क्लासरूम में जिसमें आपको इनविटेशन मिला है. ऑटो, मैकेनिकल एंड सिविल, जिन उनके पास जो क्लासरूम लिंक है, जो इनविटेशन जो ज्वाइन किया उन्होंने, उसी पे वो सबमिट करेंगे. जल्दी ही उनके पास ये लिंक आ जाएगा जिसमें आपने सबमिट करना है. और ये क्वेश्चन नोट कर लें पहले. तो क्वेश्चन क्या है आपके? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा क्वेश्चन है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एलिंग बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट. और तीसरा क्वेश्चन है आपका डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल एंड द यूनिट्स in which it is measured. Calculate the self inductance of a coil. Fourth question है what are the Coulomb's laws of electrostatics? Write important points concerning dielectric constant K. एक बार फिर सुने. What are the Coulomb's laws of electrostatics? Write important points concerning dielectric constant K. और लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ द अक्यूमुलेटर. सेकंड, EMF ऑफ एन अक्यूमुलेटर. एंड लास्टली प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग अक्यूमुलेटर्स, लेड एसिड सेल एंड नीफे सेल. और जो आपको अपनी सबमिटिंग फाइल PDF बनानी है उसका जो नाम रखना है बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है. जैसे सबसे पहले आपका नाम अंडरस्कोर, आपका एप्लीकेशन नंबर अंडरस्कोर AA, दैट इज एडिशनल असाइनमेंट. AA स्टैंड्स फॉर एडिशनल असाइनमेंट, अंडरस्कोर ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है. और जहाँ पे जिस लिंक पे आपको सबमिट करने को कहा गया है उस पे आपने इसको सबमिट करना है. जैसे ऑटो, सिविल और मैकेनिकल के लिए क्लासरूम बना हुआ है और उसी में आप अपने ये एडिशनल असाइनमेंट का कंपोनेंट इस फाइल नेम से सबमिट करेंगे. जिन लोगों को, कई लोग कहते हैं कि हमें लिंक नहीं मिले हैं, इन्विटेशन नहीं मिला है, अगर आपकी ईमेल आईडी गलत आपने लिखी हुई है अपनी मेन में तो उसके कारण आपको वो लिंक नहीं मिलेगा. तो आप अपनी पहले ईमेल आईडी ठीक कर लें. आप मेक इट श्योर कि आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है अभी उसमें आपकी जो ईमेल आईडी है उसी से आप जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो सबमिट करें. और अगर आप अपनी कोई गलत ईमेल आईडी दे रखी है वहाँ पे तो जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ वो आपकी उस ईमेल आईडी पे जा रहा है, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो अगर आपने पहले कंपोनेंट नहीं सबमिट कर पाए हैं तो ऐसा ना हो कि आप जब तक सब कुछ आपका हो जाए और आपकी ईमेल आईडी ना चेंज हो. तो मेक इट वेरी सून. जो चेंज है वो बहुत जल्दी कर लें और ताकि आप अपने कंपोनेंट जो है वो टाइमली सबमिट कर सकें. अब जिन ब्रांचों को अभी तक लिंक नहीं मिला है उनके लिए ये जो है VIT, वोकेशनल ऑटो और लेदर, इसके लिए नीचे लिंक दिए जा रहे हैं, ईमेल आईडी दी जा रही है. आपको अपने DHA 1 to 8 और एडिशनल असाइनमेंट जो है जो कि आपने सबमिट करनी है पहली को 30 और 1 के बीच में, वो इन लिंक्स पर सबमिट करेंगे. जो वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ईमेल आईडी है वो है vitphy2021@gmail.com. तो VIT वालों ने
DHA और जो बाकी और भी जो भी कंपोनेंट आपको दिया जाएगा बाद में, इसी आईडी के ऊपर सबमिट करना है, इसी ईमेल आईडी के ऊपर। और ऐसे ही जो वोकेशनल ऑटोमोबाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो आईडी है वो है VAUTO PHY VAUTO PHY 2021@gmail.com। तो वोकेशनल ऑटोमोबाइल वाले जो हैं वो इस आईडी पे अपने DHA और बाकी कंपोनेंट हैं जब भी उनको कहा जाए सबमिट करने को वो सबमिट करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आपको कहा सबमिट करने के लिए, पहले DA1 विच कंटेन्स 1 to 8 DHAs और उसके बाद में एडिशनल असाइनमेंट AA जो कि आपको 1 दिसंबर तक सबमिट करनी है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसके बाद जो तीसरा है लेदर, फॉर लेदर टेक्नोलॉजी जो ईमेल आईडी है वो है leatherphy2021@gmail.com। तो आपको अपने DHAs और बाकी जो कंपोनेंट होंगे इसी ईमेल आईडी पे सबमिट करने हैं। और जो फाइल का नाम रखना है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी लोगों ने सबमिट किया है। सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका नेम अंडरस्कोर एप्लीकेशन नंबर अंडरस्कोर DA1 और आपकी ब्रांच। ये फाइल नेम आपने यही देना है। अगर इसमें आप गलत करते हैं तो आपके इसके लिए मार्क कटेंगे। तो यू शुड नेम योर PDF फाइल वेरी केयरफुली। सबसे पहले अपना नाम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम राजेश है तो आपने अपना नाम लिख लिया, अंडरस्कोर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो 29610 है वो आपने लिख दिया, अंडरस्कोर आपका जो ये अब DHA सबमिट कर रहे हो तो उसमें आपने लिखा DA1, इसके अंडर आपके सभी जो 1 to 8 हैं वो हेडिंग के अंदर आ गए। और अंडरस्कोर जो आपकी ब्रांच है वोकेशनल ऑटो दैट इज VAUTO। अगर ये IT है तो इट विल बी VIT और अगर लेदर है तो इट विल बी लेदर। तो इस तरीके से आपको इस अपनी फाइल का नाम रखना है। तो वी स्पेसिफिक इन दिस, इसको ध्यान से लिखना है आपने, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो आपको अपने DHA सबमिट करने हैं ये तीनों ब्रांचों को, किसको, VIT, वोकेशनल ऑटो और लेदर को, वो 26/11/20 तक आपके पास टाइम है, 6 बजे तक। तो आपने अपने 26/11 तक अपने DHA जो है वो ईमेल आईडी जो आपको बताई गई है ऊपर उस पे आपने लोड कर देने हैं, सेंड कर देने हैं। और 26 के बाद में आपका DHA1 कंसिडर नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल एंड नोट इट पॉजिटिवली। आपको ये जो आपको टाइम दिया गया है इसी टाइम के अंदर ही आपने इसको सबमिट करना है। क्लियर? और जो ब्रांचेस अभी रह गई हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर और ICT सेंटर्स, उनको भी बहुत जल्द ऐसी आईडीज़ दी जाएंगी और वो अपने कंपोनेंट उन आईडीज़ पे सबमिट करेंगे। तो यू शुड ऑल्सो वेट फॉर 1-2 डेज। आपको भी ऐसे ही जैसे इनको आईडीज़ मिली हैं आपको भी मिलेगी। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेट थी मैंने जो शुरू में बताई थी कि आपको अपने DHA कैसे बनानी है। तो ये सबसे पहले आपका था, आपने अपने हैंड राइटिंग में जो भी DHA बनाना है आपकी अपनी हैंड राइटिंग में हो और उसके ऊपर डेट वाइज और उस डेट वाइज अरेंज्ड हो। और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ये DHA नंबर, कौन सा DHA है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, और आपका नाम क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, और ईमेल आईडी। यहाँ पे वो आईडी लिखनी है जिस आईडी से आप DHA सबमिट कर रहे हो, वही आईडी इसके ऊपर लिखनी है। और बाद में अपने सिग्नेचर और किस डेट का ये DHA है। तो इस तरीके से ये बातें आपने इसके ऊपर आपने DHA शुरू करने से पहले लिख ली होंगी पहले से ही, क्योंकि आपने ये काम किया हुआ है। तो अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ स्किप करते हैं या नहीं लिखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन अधूरी छोड़ते हैं, तो उसके लिए आपके 2 नंबर कटेंगे पर DHA, जिस DHA में आपकी गलती होगी। तो इसलिए इन सभी कॉलम्स को आपने बहुत केयरफुली भरना है।
किसको? नाम को, एप्लीकेशन नंबर को, ब्रांच को, ईमेल आईडी को और डेट को, और साथ में अपने सिग्नेचर कि आप ही हो। और इसकी जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो अपने पास रख लें। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी इसकी देखने की तो मैं आपसे ये जो आपने सबमिट किया है उसको मंगवा के देख सकता हूँ। जो आप सबमिट कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी आपने अपने पास रखनी है। बाकी आपको पता ही है जो DHA आपका है वो 5 नंबर का है, और DHA आप उसी दिन बनाया जिस दिन आपको दिया जाता है। और हो सकता है कि कई बार एक DHA दूसरी ब्रांच के DHA से डिफरेंट हो, तो अगर ऐसा है तो अगर गलत सबमिट करते हो तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अब आपने ये सब कुछ देख लिया, ये मैंने जो मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसी में सब कुछ आपको बताया था DHA सबमिशन। एक बार फिर से आपको बताया गया है कि आपने इस फॉर्मेट में अपने DHA सबमिट करने हैं। क्लियर? तो ये नोट कर लें अपनी आईडीज। दिस इज फॉर वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज फॉर वोकेशनल ऑटोमोबाइल एंड दिस इज फॉर लेदर टेक्नोलॉजी। और आपने अपनी ब्रांच के हिसाब से उसी ईमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। Clear? Okay. So this is all for today. Thank you.